हेलो गाइस, आपका दूसरी वीडियो में स्वागत है। वैसे तो बहुत समय हो गया इस चैनल पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। आज मैं सोच रहा था कि मैं इस JBL 5.1 को एक पुराने होम थिएटर से कंपेयर करूँगा आज। लेकिन सोचा नहीं था कि ये इतना बुरा जाएगा कि बता ही नहीं सकता। अभी मैं ये एडिट कर रहा हूँ वीडियो को और मैं कुछ शॉर्ट्स ऐड कर रहा हूँ ट्रांसफ़र की कि ब्लैक स्क्रीन होगी, नीचे जाएगी। नाउ आई विल बी कटिंग द वीडियो राइट नाउ। रिलीज गाइस, आई एम आल्सो रियली बैड एट एडिटिंग। वेट, लेट मी टर्न द लाइट्स। This is the home theater I'm talking about. It's quite old. The front panel is missing. Every connection is unplugged. Not even plugged in right now. These are the speakers, guys, which I was talking about. I have to talk about. And the subwoofer, I don't know this condition right now. What had happened was initially everything was plugged in. I was playing game Roblox with music on, and today I also bought this remote. It's brand new. It's unofficial. So guys, this is the remote I was also talking about. This remote, it's unplugged right now. I'm really mad at it. Horrible condition. Still mad at it. So guys, the smoke started to come out. Whenever I smell this part especially, there's a burning scent. I don't know the condition specifically of the subwoofer because I tested it by using this instead of the subwoofer. Because the subwoofer port, which you know is this, was super hot. It was sizzling. No joking. Hopefully the amplifier is just fine. I turned it on 2 times. No error showed up till now. Since it's now unplugged, I don't want to turn it on. And I was really disappointed that these 3 amp speakers, this is the center speaker, which I realized the smoke started coming out from here, approximately here, and little here and little here. You notice those little holes above them, right above here. Hopefully you can see them. It's very light, but you can see it. It is there, guys. The volume reached 50. There's a setting in the Sony. I think there was a setting which I found. It was, I think, something like audio. Turned it up all the way. It increased the volume. I was really surprised that the 15% audio came out there. Yeah, I think it was audio offset. I'm not plugging in the remote again. I don't want any problems to happen again. It was volume offset. Now I remember. I turned it up all the way to 6. The volume was now 23, I think. And the home theater volume was full. According to that, the volume was full. According to that, the volume was approximately 23%. And suddenly the speaker started to smoke और धुआं निकलने लगा स्पीकर से। कर भी क्या सकते हो अब, ऐसे रिपेयर के लिए भेजूँगा। अगर कोई भी इधर इस वीडियो पे कोई रिपेयर गाइड है, क्या प्लीज़ मेरे को गाइड कर सकते कि हुआ क्या था, क्योंकि मैं एग्री करता हूँ लाउड हुआ था और सडनली मैं इधर खड़ा था और ये स्पीकर है, ये स्पीकर काम नहीं करता, ख़राब है ये, और क्रैक होना शुरू हो गई, जलने की बदबू आई। भाग के मैंने अनप्लग कर दिया। वो रेफरेंस इस प्लग पर प्लग नहीं था और स्मोक निकलना शुरू हुआ। बंद किया, देखा नहीं स्मोक कैसे आया। दादी को बुलाया, दादी से ऑन कराया, दादी गई वापस, दादी को लगा कुछ नहीं है और ऑन किया। ऑन करके पता चला कि जो स्पीकर था उसमें से धुआं निकला। बंद किया, फिर दादी को दिखाया, वो कह रहे कि स्पीकर ख़राब है।
वो टेक्निकल गाइड नहीं है, तो प्लीज़ अगर कोई है प्लीज़ मेरे को गाइड करो। मेरे को बहुत पसंद है, 18 साल हो गया वैसे से, इसकी लाइफ है नहीं ज़्यादा। इसके अंदर हायर वोल्टेज की स्पीकर लगा देना प्लीज़, और जो इसका एम्पलीफायर है वो प्लीज़ अपग्रेड कर देना थोड़ा सा उसके हिसाब से। वैसे तो इसका कोई कैपेसिटर बल्ज नहीं है, मैंने आज चेक किया था। अब जानते ही होगे जो इसके ऊपर बेंच है, ये बेंच होते हैं, ऐसी मस्ती में मैं टॉर्च मार के अंदर देख रहा था, देखा हर जगह मिट्टी मिट्टी। ओ प्लीज़ अब अगर आप ये सब करोगे तो प्लीज़ आप इसका प्लीज़ फ्रंट पैनल प्लेस कर देना, ढंग करके रख दिया इसने। और थैंक यू, जय हिंद, thank you for watching this video, and I will see you guys next time when I actually compare this home theater to this bad boy to the JBL 5.1. It is gonna be amazing. And by the way, I'm looking forward to also upgrade this subwoofer is good, 1.5 amps. The speakers are 3 amps currently, no modification. This is the oldest specifications I know. It's the DAV, as I told you. And thank you guys for watching. I will be soon uploading this video to YouTube.